हमारे ऑडियंस को आप बताइए गोल्डन वीजा के बारे में, क्या है गोल्डन वीजा और क्यों इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। To attract foreign investments, the government introduced this concept of golden visa. How this is different from the other residency programs. लोग अमेरिका माइग्रेट करते थे through EB-5 visa program, which is so popular. A lot of Indians are migrating, and they still continue to do that. And post-COVID, we have seen that a lot of Americans have now started looking at options elsewhere. क्या आप भी इंडिया में रहकर यूरोप की रेजिडेंसी लेना चाहते हैं या उसके बारे में सोच रहे हैं? तो आज हम आपको इस पॉडकास्ट पर बताएंगे गोल्डन वीजा क्या है, व्हाट इज गोल्डन वीजा, व्हाट आर इट्स बेनिफिट्स एंड हु इज एलिजिबल टू गेट द गोल्डन वीजा प्रोग्राम। लेकिन वीडियो शुरुआत करने से पहले आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ओ माई फाइनेंस को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज मेरे साथ हैं शो पर बात करने के लिए मिस्टर परेश कारिया। ही इज द सीईओ ऑफ एक्विस्ट एडवाइजर्स। हाय परेश, वेलकम टू द शो। Hi Charu, thank you for having me. प्लेजर इज ऑल आवर्स। सो परेश, पहला सवाल, इतने सारे वीजाज अवेलेबल हैं, बिजनेस वीजा है, एम्प्लॉयमेंट वीजा है, वर्क वीजा है। हमारे ऑडियंस को आप बताइए गोल्डन वीजा के बारे में, क्या है गोल्डन वीजा और क्यों इसको गोल्डन अपॉर्चुनिटी कहा जाता है। Right. So, चारों जैसे आपने कहा, there is so many categories of visas that are available. हर वीजा का ऑब्जेक्टिव अलग होता है और जो गोल्डन वीजा है दैट स्टैंड्स आउट। गोल्डन वीजा इज क्वाइट डिफरेंट। ये एक वीजा है, बाकी जो वीजा आपने बताया स्टूडेंट वीजा है, ट्रैवल वीजा, वर्क वीजा, वो सब नॉन इमिग्रेंट वीजा होते हैं, वो टेम्पररी वीजा होते हैं, आपको कुछ समय के लिए मिलते हैं एंड देन यू हैव टू आइदर एक्सटेंड इट और यू हैव टू कम बैक। ये जो वीजा गोल्डन वीजा जो है, ये एक टाइप का परमानेंट रेसिडेंसी से आपको मिलता है, राइट। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पैसे इन्वेस्ट करने हैं। बाकी वीजाज की कैटेगरी के अगर आप जाओगे तो आपको कुछ पॉइंट स्कोर करने पड़ते हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स मीट करनी पड़ती है, आपके पास जॉब ऑफर होना चाहिए और समथिंग लाइक दैट। यहाँ कोई कंडीशन नहीं है। गोल्डन वीजा की इतनी ही कंडीशन है दैट यू नीड टू इन्वेस्ट मनी। दिस प्रोग्राम्स रिक्वायर इन्वेस्टमेंट एंड प्राइमरली ये इन्वेस्टमेंट होता है रियल एस्टेट या रियल एस्टेट रिलेटेड प्रोडक्ट्स। बस आप सिर्फ पैसा इन्वेस्ट किए और आपको और आपकी फैमिली को गोल्डन वीजा मिल जाता है। So that's the reason why this visa stands out. It is very easy to get golden visa. All you have to do is invest money. परेश, कंट्रीज के बारे में भी थोड़ा इलैबोरेट करिए कि कौन सी कंट्रीज हैं जो ये गोल्डन वीजा प्रोवाइड कराती हैं, बिकॉज हर एक कंट्री का जो है अपना स्पेसिफिक रूल होता है। सो कौन सी कंट्रीज हैं? Right. So countries, while discussing the countries, let us go back a step back and look at the history of the golden visa, how this entire concept started. So basically, it's usually the European countries which are offering golden visa. और ये प्रोसेस चालू हुआ somewhere around 2010-2012 में। We all know that in 2009 we had the financial crisis and many of these European countries were in trouble, especially countries like Spain, Greece, Portugal. Their economies were hit. So in order to उनकी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए they wanted foreign investments. To attract foreign investments, the government introduced this concept of golden visa, through which they said that we'll offer residency permits, residency rights to investors who come and invest in our country. They invest in the real estate and help in reviving our economy. So since then, these programs have become very popular. You have Portugal golden visa, you have Greece who is offering, Spain. These are the three most popular golden visa programs that we have. Apart from that, there are other countries also, जैसे कि Malta है, Cyprus है, Latvia है, Bulgaria है, Hungary has recently announced a golden visa program, but these are all not that popular. जो दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर प्रोग्राम्स है इज ग्रीस, पोर्चुगल एंड स्पेन। इनफैक्ट परेश, कई लोगों से हमने जानने की भी कोशिश करी तो ज्यादातर लोगों को गोल्डन वीजा के बारे में पता नहीं है, क्योंकि एक ये भी है कि अगर किसी को बाहर जाके फर्दर स्टडीज के लिए जाना है या एम्प्लॉयमेंट उस पे जाना है तो दैट पर्सन विल ऑब्वियसली कंसिडर टू टेक द एम्प्लॉयमेंट वीजा। बट व्हाट आर द बेनिफिट्स? क्या बेनिफिट्स जो है वो स्पेसिफिकली गोल्डन वीजा में मिल सकते हैं?
राइट। देखिए, गोल्डन वीजा का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपको इस कंट्री में रेसिडेंसी राइट मिलती है विदाउट डूइंग एनीथिंग, यू जस्ट हैव टू इन्वेस्ट द मनी। द सेकंड थिंग इज, most of the programs are structured in such a way that you have a right to go and stay in that country. आप वहाँ रह सकते हैं, आपको वहाँ पे हेल्थ केयर, यू आर ट्रीटेड एज अ रेसिडेंट ओवर हियर ओवर देयर, आपको हेल्थ केयर बेनिफिट मिलती है, आपको बच्चों को अगर वहाँ पढ़ना है तो वहाँ पे एजुकेशन बेनिफिट मिलती है, आप वहाँ जाके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, एंड ऑल दिस आर राइट्स। बट the good part about golden visa, which differentiates it from other type of visas, is you don't have an obligation to go and stay in these countries, right? So आप एक काइंड ऑफ राइट ले सकते हैं, यू कैन कंटिन्यू टू बी इन इंडिया, यू कैन कंटिन्यू टू डू योर बिजनेस, गो अबाउट इट, एंड स्टिल यू हैव अ राइट। सो इट्स काइंड ऑफ वर्कड एज अ बैकअप ऑप्शन। एंड ये प्रोग्राम्स, गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स, इंडिया में कोविड के बाद काफी पॉपुलर हो गए हैं, बिकॉज लॉट ऑफ पीपल रियलाइज द प्रॉब्लम्स दैट वी फेस ड्यूरिंग कोविड। सो लोगों को लगता है कि एक प्लान बी होना चाहिए, एक बैकअप प्लान होना चाहिए। अगर समथिंग गोज रॉन्ग इन आवर कंट्री, वी शुड हैव ऑप्शन टू मूव टू सम अदर कंट्री। इसीलिए इंडिया में ये जो प्रोग्राम्स है, जैसे आपने कहा, यस इतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ये लास्ट 2 साल में ही लोगों ने गोल्डन वीजा का सुनना चालू किया है। हालांकि ये प्रोग्राम्स हैव बीन अराउंड फॉर क्वाइट सम टाइम, सिंस 2010, बिकॉज पीपल आर नाउ कंसिडरिंग इट एज अ बैकअप ऑप्शन। लोगों को ये लगता है कि हम एक राइट लेके रखते हैं और जब भी जरूरत पड़े हम वहां जा सकते हैं, या तो फ्यूचर में हमारे बच्चे वहां सेटल करना चाहते हैं तो वहां पे जा सकते हैं। The other reason why this golden visas have become very popular now after the COVID particularly is, इससे आपको, ये यूरोपियन गोल्डन वीजा से आपको वीजा फ्री ट्रैवल मिलता है to all the 26 Schengen countries, right? So if you have a golden visa from any of these countries, Greece, Spain, Portugal, etc., तो आप without visa 26 Schengen countries जैसे कि स्विट्जरलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बेल्जियम वगैरह, वहां पे आप आसानी से ट्रैवल कर सकते हैं। एंड दिस इज वन ऑफ द मोर पॉपुलर रीजन नाउ ऑफ लेट, बिकॉज अगर जो भी हमारे यहाँ से इंडियंस काफी ट्रैवल करने लगे हैं, और जब भी हम यूरोप ट्रैवल करते हैं तो शेंगन वीजा मिलना मुश्किल होता है। एक तो टाइम ज्यादा लगता है, सेकेंडली जो ड्यूरेशन हमें मिलता है शेंगन वीजा का, अगर आप 15 दिन के लिए हॉलिडे के लिए जा रहे हो तो आपको सिर्फ 15 दिन का हॉलिडे वीजा मिलेगा। एंड इफ यू वांट टू गो अगेन नेक्स्ट ईयर फॉर अ हॉलिडे, यू हैव टू अप्लाई अगेन एंड गो थ्रू द एंटायर प्रोसेस। विद गोल्डन वीजा यू डोंट हैव टू गो थ्रू दैट, आपके पास वीजा फ्री आप इसी के ये सारी कंट्रीज में ट्रैवल कर सकते हो। So that's the reason why golden visa is becoming very popular of late. It is becoming very popular since after the COVID time. Because data को भी अगर देखें तो eligibility criteria क्या होना चाहिए golden visa लेने के लिए, क्या वो legal parameters भी हैं जो follow करने चाहिए, वो बताइए हमारे audience को। Right. So जैसे मैंने कहा कि देखिए ये बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, एलिजिबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिंपल है, आपके पास पैसे होने चाहिए, राइट? आपके पास बस पैसे होने चाहिए, आपको दिखाने हैं कि यू आर आपने कि पैसे कैसे अर्न किए, आपको मे बी आपका इनकम टैक्स रिटर्न या वो दिखाना होगा कि भाई मेरे पास इतने पैसे हैं, व्हाइट में पैसे हैं, और वो पैसे आपको यहाँ से इस कंट्री के बाहर से वहां पे रेमिट करने हैं। आपके पास इंडिया में है, आप इंडिया से पैसा बाहर रेमिट कीजिए, आपके पास लीगल मनी, इफ यू हैव पार्क्ड इट इन यूएस, यूके और एनी अदर कंट्री, फ्रॉम देयर यू कैन सेंड इट टू दिस कंट्री एंड बाय द प्रॉपर्टी। बस इतनी ही रिक्वायरमेंट है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये हुए कि आपके पास क्लीन क्रिमिनल रिकॉर्ड होना चाहिए। So whenever you are applying for the golden visa, or for that matter permanent residency or any other long-term visa in any other country, you need a police clearance record. So that's it, as simple as that. इसके अलावा और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है, आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करते हैं वो वहां पे दिए। yes, there are a lot of requirements, so you have to make eligible investments. That's it. Okay. So my next question, पहले आप किसी कंट्री में जाएंगे तो वहां पे आपको उसका रेजिडेंसी मिलेगा। So Right. does golden visa help you get the citizenship status also? Because every country का अलग पैरामीटर है। जैसे स्पेन का देखें तो वहां पे आपको 10 years continuously वहां पे आपको रहना पड़ेगा, तब जाके आपको सिटीजनशिप मिलेगा। तो उसका क्या क्राइटेरिया है? राइट। देखिए, जहां तक सिटीजनशिप का सवाल है, मोस्ट ऑफ दिस गोल्डन वीजा प्रोग्राम्स डू नॉट गिव यू, दे ओनली गिव यू अ रेसिडेंसी परमिट, दे गिव यू अ रेसिडेंसी राइट, दे डोंट ऑटोमेटिकली गिव यू अ सिटीजनशिप।
इसमें जनरली हमने देखा है कि नॉट ओनली दिस गोल्डन वीजा कंट्रीज बट मोस्ट ऑफ द कंट्रीज अक्रॉस द वर्ल्ड, चाहे आप यूएस लीजिए, कनाडा लीजिए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कहीं पे भी आप देखिए, अगर आपको सिटीजनशिप उस कंट्री की चाहिए तो आपको कुछ समय तक वहां रहना होगा. Typically, generally during about 5 to 6 years period, you have to stay there at least for majority period of time. यानी अगर 5 साल का requirement है, for instance in US, then you have to stay there for 2.5 years in during the 5 years, right? Now that applies to golden visa also to most of the countries. The only exception is Portugal. In case of Portugal, golden visa, अगर आप golden visa लेते हो पोर्चुगल का, तो आपको वहां पे सिटीजनशिप मिलती है 5 साल के बाद, प्रोवाइडेड यू हैव स्टेड इन पोर्चुगल ड्यूरिंग दिस previous 5 years for at least 7 days in a year or 14 days in a block of 2 years. So Portugal is the only country जहां आपको बिना रहे गोल्डन वीजा मिल सकता है. बाकी कंट्रीज में अगर आपको चाहिए तो वहां रहना पड़ेगा. लाइक यू सेड, इन स्पेन यू हैव टू स्टे देयर फॉर 10 years. ड्यूरिंग दिस 10 periods you have to stay there for more than 6 months a year to qualify. Similarly, for Greece, you have to stay for 7 years. After 7 years, you may be eligible for citizenship. Whereas Portugal में आपको only 7 days a year or 14 days in 2 years. For 5 years, you stay and you become eligible for citizenship. Okay. So can you include your family members also in this program? Yes, the beauty of the Golden Visa program is you can not only include your immediate family members, but also extended family members, right? When we talk about immediate family members, it is husband, wife, and children. Dependent children. Now, dependent children means, they are below 21 years of age or below 81 years of age, varying from country to country. So typically, if in case of US, Canada, UK, Australia, you can only take your, spouse and children. In case of golden visa programs, you can not only take your spouse and children, you can also take your parents. And in some cases, your in-laws also. Like in case of Portugal, you take your parents, you take your spouse's parents also. And the children, if children are adult, but they are still dependent on you. If they are still studying, if your child is, let's say, 20 years, 23 years, and they are still studying and you are supporting them, then they can also be included in your application. Okay. Can you tell us about the cost also of the different countries and how this is different from the other residency programs? Right. So let's talk about, the investment amount required for different countries. Now, let's start with Spain. Spain, you need to invest for minimum 500,000 euros in a property in Spain. It could be a residential property, it could be a commercial property. So आपको 5 लाख यूरो यानी करीबन 4.5 करोड़ होता है इसका investment amount. Okay, when it comes to Portugal, now Portugal में investment amount was about 280,000 euros. That means about 2.5 crores था. This was till about a year back. Now they've increased that, they've removed that option. वो भी आप real estate में invest कर सकते थे. There were different categories. You could invest in real estate, you could invest in funds, so on and so forth. But with Indians, real estate was the most popular, or real estate में minimum investment amount was 280,000 euros. But since last year, that option is no longer available. You cannot invest in real estate in Portugal. However, you can invest 500,000 euros in a fund. Fund type of investment. These are private equity funds or mutual funds. तो आप इसमें 5 लाख यूरो इन्वेस्ट कर सकते हैं in order to get the golden visa. So Spain and Portugal is both 500,000. In case of Spain, it is real estate. In case of Portugal, it is funds. The third option is Greece. In case of Greece, Greece was one of the most, affordable golden visa program in Europe. You had to invest 250,000 euros in a property. Okay. Right now, that has changed because all these programs, like we discussed, became so popular after the COVID. From people from all over the world started investing in it. There was a big rush. There was a huge demand. So this countries decided to increase the investment amount. Now, Greece has already increased the investment amount last year from 250,000 to 500,000 for certain properties. So there are two categories now in Greece. In some areas, like if you go to the capital city, Athens, you go to the popular islands, the Santorini, Mykonos, etc. यहाँ पे कुछ areas में आपको minimum 500,000 euros की property में invest करना है. Whereas rest of the Greece, you can still get
a property for 250,000 euros. However, even after increasing the amount, they are seeing a big rush. People are still continuing to invest in golden visa, और इंडिया से भी काफी लोगों ने ग्रीस में इन्वेस्ट करना अभी चालू कर दिया है. And now, just few days back, the Greece government has again announced that वो increase कर रहे हैं investment amount. So now the investment amount जो 5 लाख था, जो प्रॉपर्टी का 5 लाख था, वो 8 लाख हो रहा है यूरोस, और जो 2.5 लाख यूरोस था उसका 4 लाख हो रहा है. So there will be two categories, 4 lakh euros and 8 lakh euros. So the minimum investment amount from 250 is moving to 400,000 euros. So this is as far as these three countries are concerned. आपने इन्वेस्टमेंट की बात करी, रियल एस्टेट. अगर कोई प्रॉपर्टी वहां पे खरीद रहा है, सो इज इट नेसेसरी ऑल्सो कि आपको उसमें रहना पड़ेगा फॉर अ गोल्डन वीजा? नहीं, नॉट नेसेसरी एट ऑल. इट्स एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. इनफैक्ट, जैसे मैंने कहा कि गोल्डन वीजा की ब्यूटी ऑफ द गोल्डन वीजा इज दैट यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू स्टे इन दैट कंट्री, right? However, you have to buy to qualify. So obviously, if you're buying a property but you are not staying over there, like most of the people don't stay there, तो वो लोग रेंट पे लगा देते हैं. ये प्रॉपर्टी जनरली रेंट पे लग जाती है और अच्छा रेंटल यील्ड आ जाता है. परेश, एक बहुत ही अहम सवाल पे अब मैं आ रही हूँ कि why are many HNIs जो हैं वो मूव कर रहे हैं, they are migrating from India through this route. Because recently I was reading this report जो Henley and Partners, that's a global leader in residency and citizenship by investment, उसने एक रिपोर्ट जारी करा है और ये बोला है कि अब साल 2024 में जो है हम जो डेटा देखें, so that will be around 1,28,000 HNIs. They will globally move to a country this year. एंड लास्ट ईयर का भी जो डेटा देखे, दैट वाज समवॉट अराउंड 6,500 HNIs थे जो 23 में कि वो उन्होंने मूव करा है. सो व्हाई दिस इज हैपनिंग? राइट. सो लेट मी पुट इट इन द कॉन्टेक्स्ट. जो हम रिपोर्ट की बात कर रहे हैं वो एक रिसर्च रिपोर्ट है जो पब्लिश किया गया था, और ये थ्रू प्राइवेट इंटरव्यूज वगैरह पब्लिश किया गया है. इसमें कहा गया है कि this year globally about 123,000 people will move, और लास्ट ईयर आपने कहा इंडियंस मूव किए थे 6,500, राइट? सो देखिए, ये HNI का मूवमेंट तो ये इज अ पॉपुलर कॉन्सेप्ट. नाउ पीपल आर मूविंग, दे आर मूविंग फॉर वेरियस रीजंस. बट अगर हम इंडियंस, खास करके इंडियन बिजनेसमैन और बाकी बिजनेसमैन की बात करें, दे आर मूविंग, दिस मिलियनर्स आर मूविंग प्राइमरीली फॉर बिजनेस रीजन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एंड टैक्स प्लान. These are the two primary reasons which are driving the millionaires out of India. And they are popular destination. अगर हम इंडियन के बारे में बात करें तो वो है सिंगापुर एंड दुबई. Both Singapore and Dubai offer very attractive tax structures, right? Like in case of Singapore, if you have business over there, you pay less than 20% tax. If you have business in Dubai, you pay about 9% tax on your business. And there are a lot of, various other benefits. These are global. यहाँ से आपको ग्लोबली एक्सपांड करना हो बिजनेस तो आप आसानी से एक्सपांड कर सकते हैं. यहाँ पे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर और क्रेडिबिलिटी वगैरह काफी अच्छी है. सो प्राइमरली बिजनेसमैन हु आर मूविंग आउट फॉर दिस रीजन. सो 6,500 HNIs का आपका कहा है. आई ऑल्सो नो, आई हैव मेनी HNI क्लाइंट्स हु हैव मूव्ड टू दिस कंट्रीज, एंड उनका रीजन तो यही कि बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग एंड देन ऑफ कोर्स क्वालिटी ऑफ लाइफ. दे आर नॉट यूजिंग द गोल्डन वीजा. जो गोल्डन वीजा जो लोग कर रहे हैं, the people who are moving through the golden visa are essentially, kind of, yes, they are also millionaires, but they are the ones who are kind of looking for a backup visa. They are looking at a retirement plan, or they are looking for settling their children in the Europe, or they are doing it for ease of business, visa-free travel ke liye. So these are some of the reasons why people are migrating outside India. And Americans were the top nationality थे जो to apply for a golden visa, right? And as per the global citizenship program index, Malta जो है वो number 1 पे आती है. Right. So there are the list of the countries जो पूरा ranking है as per this citizenship program index. Right. So आपने सारी countries की almost बात कर ही ली. So which country has the best golden visa? Right. I will come to that, but before that, I would like to comment on that what you said. About one is Americans. Yes, it is true. COVID के बाद Americans are migrating. In fact,
पहले लोग अमेरिका माइग्रेट करते थे थ्रू EB-5 वीजा प्रोग्राम, which is so popular. A lot of Indians are migrating and they still continue to do that. And post-COVID, we have seen that a lot of Americans have now started looking at options elsewhere. So the golden visa, especially Portugal और Greece, काफी popular है because Americans also want a backup option. हमें पता है कोविड के टाइम पे यूएस में क्या हुआ था, और ये प्रोग्राम है यहाँ पे दिस कंट्रीज ऑफर गुड रेसिडेंसेस, दे ऑफर गुड बैकअप, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग कम है कंपेयर टू द यूएस, दैट्स व्हाई लॉट ऑफ अमेरिकन्स आर गोइंग फॉर दिस प्रोग्राम. सेकेंडली, आपने जो बात बताई, आपने जो इंडेक्स क्या बताया, जो माल्टा का टॉप में है, आई वुडंट अग्री विद दैट बिकॉज this report does not reflect. This is as per again the Henley and Partners Citizenship I would program. not like to comment on that because Henley and Partners is closely associated with Malta, so I wouldn't like to comment on that. So at least India से तो मैं कोई नहीं देख रहा हूँ कि Malta जा रहा है. So maybe they are talking about some other countries, Russia, China, Iran वगैरह से लोग जाते होंगे, but certainly not from India. I have not come across to any people. At least I don't have a single client who has opted for Malta. Now let us look at your other question. What was the second part of the question? Sorry. Which country has the best golden visa? Well, if you ask me, it depends upon what is your objective. आपका objective क्या है? अगर आपका objective है कि आपको सिर्फ एक बैकअप प्लान चाहिए और कम से कम इन्वेस्टमेंट करना है, तो आज की डेट में उसके लिए ग्रीस गोल्डन वीजा इज द चीपेस्ट ऑप्शन. एंड वहाँ पे हॉलीडे के लिए भी अच्छी जगह है, आप ट्रैवल कर सकते हो, रेंटल इनकम भी ज़्यादा है. एंड दूसरा, अगर आपको ऑब्जेक्टिव यह है कि नहीं आपको सिटीजनशिप भी चाहिए, बिकॉज सिटीजनशिप के बहुत फायदे हैं, स्पेशली यूरोपियन सिटीजनशिप के. अगर आपके पास किसी भी यूरोपियन कंट्री का सिटीजनशिप है, then you can settle in any of the 27 European Union countries. So for instance, if you have a citizenship of Portugal, with that citizenship आप जर्मनी में जाके रह सकते हो, आप फ्रांस में जाके रह सकते हो, या कहीं पे भी सेटल हो सकते हो. सेकेंडली, आपके बच्चे you get education benefits in across all these 27 countries. You get healthcare benefits in all these 27 countries. And more importantly, you will also be eligible to a passport. Now, a passport which is very powerful. For instance, a Portuguese passport. The Portuguese passport is more powerful than the US passport. Why? Because with Portuguese passport, you can travel to more than 180 countries visa-free. This covers the whole world. If you have a Portuguese passport, आप दुनिया में कहीं पे भी visa-free travel कर सकते हो, except Russia, China and African countries. Right? और US passport से आप 170 plus countries में travel कर सकते हो. So if you are looking at citizenship, if you want global mobility, and if you want a powerful passport, then Portugal Golden Visa is going to provide you that. If your objective is you are okay, you don't want a foreign passport, you don't want a foreign citizenship, आपको सिर्फ residency चाहिए, then I think Greece is the most affordable program right now. Last but not the least, परेश, थोड़ा सा OCI के बारे में बताइए हमारे ऑडियंस को. Right. See, OCI is a concept which is unique to India. यहाँ पे हमने ये concept introduce किया है. The full form of OCI is Overseas Citizens of India. तो ये एक benefit दिया जाता है foreign nationals को जो Indians यहाँ से बाहर जाते हैं, right? और foreign citizenship लेते हैं. They were migrated outside India and they've taken foreign citizenship. Obviously, they lose Indian citizenship. India does not allow dual citizenship. So if you are taking up for citizenship of any other foreign country, you lose your Indian citizenship. However, to help these people who have taken foreign citizenship to maintain their ties with India, this overseas citizenship of India concept was introduced. And through this, you get a right in India. It's like getting permanent residency in India. You can travel to India without visa anytime. You can stay in India as long as you want. You can do work over here. You can do business over here, except you cannot vote. So it's like you are an Indian citizen right now. You have an Indian passport, but you move to US. You have a US green card, और US में आप सब कुछ कर सकते हो. उसका reverse concept है. Let's say you are an Indian citizen who has now become a US citizen. So you are. And then you take an OCI card. So with OCI card, you get all the benefits and rights in India. Thank you so much for joining in, Paresh. Thank you, Charu. It was wonderful talking to you. And I hope Same here. बहुत अच्छे से आपने हमारे दर्शकों को बताया गोल्डन वीजा प्रोग्राम के बारे में और क्या इसके बेनिफिट्स हैं.
Right. बहुत बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। Thank you very much. Bye. थैंक यू।